Welcome to the series of video lectures on C programming language. Today's topic is under the grammar of C language, the input-output instruction. Before that, in last lectures we have discussed variable declaration instructions and arithmetic and logical instruction. Instead of logical instruction we have discussed arithmetic instruction, and today we are going to discuss input-output instruction. In last class, in arithmetic instruction we have discussed LHS assigns RHS. Explicit operator must be specified, single line expression must be there, then use of brackets we have seen, then expression evaluation rules we have seen. In that we have discussed that the result of evaluation of any expression in programming depends upon the type of operands used irrespective of the type of operator. So this was the last class. Now starting with today's class, we are going to study input-output instruction. First of all, we should learn what is input and what is output. In any system, if we take an example, it may be either the hardware system or software system. कोई भी सिस्टम जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसका जो मोटिव होता है कुछ ना कुछ ऑब्टेन करना होता है, कुछ प्रोसेसिंग उस सिस्टम में होती है. So whatever raw that we provide to any system, that is known as the input to the system. That input is processed in this system, and whatever outcome is there is known as output. So this is the simple definition of input and output. Take an example. If we take about the example of mechanical system, यदि हम लोग इंजन की बात करें तो इंजन एक्चुअली बनाया गया है फ्यूल को प्रोसेस करने के लिए. So the fuel will be the input to the engine system. After consumption of the fuel, we get the output as the distance traveled or energy obtained from that engine. So that is the example of your system. Now in C, the input and output is achieved using the console input output. The system will be connected with some input device, like for example keyboard, and the system will be connected with an output device, for example monitor. So there should be some mechanism to get the input from the input device inside the system, and that can be achieved using the input. And there must be some mechanism to display the output on the user screen, and that can be achieved using the output. So in C, the console input output, there are two types of functions. One is formatted input output function, another is unformatted input output function. Formatted input output functions में हम लोग इनपुट और आउटपुट वैल्यूज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में इनपुट या आउटपुट जो डेटा होता है उसकी कोई भी फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते. अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक input. Now for input we use the formatted input function scanf, and the syntax is as follows. That is the scanf, then in double quotes we have to write format specifier, double quotes close, and then this is the special operator ampersand and var name. Now हम इनपुट के थ्रू करना क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी इनपुट डिवाइस आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड से हम एक वैल्यू इनपुट कराएं और वह वैल्यू मेमोरी में किसी वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए. var नेम उस वेरिएबल का नाम है जिसमें हम लोग इनपुट वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं. So this is the name of variable for which we are going to take the input. This operator is a special operator known as ampersand, and in a regular language we name it as the address operator. Address operator. Now why this operator is used वो भी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में. Now here this is the format specifier if we are using the formatted input function. Now
what does this F means in scanf? That F actually stands for formatted. F for formatted. So we must have to specify the format of the input data to be scanned, that to be stored in the var name, that is the name of variable. इसे डिटेल में समझते हैं. मान लेते हैं मेरे पास एक वेरिएबल है, मान लेते हैं वेरिएबल का नाम num है. लेट अस से दिस इज अ वेरिएबल. हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है कि द वेरिएबल will be created in the memory where the contiguous 2 bytes are free. This may be any location. We are not aware of that location, that particular location where this variable is actually created. So somewhere in the memory, the variable num will be created, which will consume 2 bytes of memory and will hold the integer data. Now we want a value from keyboard to be stored in this variable num. What should be the syntax? Before writing the syntax, we must specify the format specifier. We must know the format specifier for different type of variables. So here are the list of format specifiers. If the variable for which we are going to scan a value is of the type short signed int, the format specifier may be used as %d or %i. If the variable is type of short unsigned int, it must be %u. If the variable is of the type long signed int, it must be %ld. For long unsigned int, it must be %lu. For unsigned hexadecimal, it must be %x. For unsigned octal, it must be %o. For float, it is %f. Double, it is %lf. For signed char, it is %c. For unsigned char, it is %c. And for strings, the format specifier used as %s. Now in all, we can say that the format specifier actually depends upon the type of variable for which we are scanning the value. Let us specify that here. This format specifier depends upon the type of variable for which we are going to scan the value. Now let us say if we are scanning the value for the integer type of variable, the format specifier will be %d. If the type of variable for which we are going to scan a value is of the type char, the format specifier will be %c. If the type of value is float type, then the format specifier will be %f. In all, we can say that the format specifier depends upon the type of variable for which we are going to scan the value. So now again take the example of an integer variable. Let's say we are having an integer variable num and we want to scan the value for that. What should be the syntax? First of all, we must have to write scanf, then the corresponding format specifier. Now as the variable is the type of integer, we must have to specify the format specifier as %d. चूंकि कोई और वैल्यू स्कैन करने के लिए नहीं है, तो वी शुड क्लोज द डबल कोट्स, देन कॉमा, एज स्पेसिफाइड इन द सिंटैक्स, देन दिस इज द एम्परसेंड ऑपरेटर एंड देन द नेम ऑफ वेरिएबल फॉर विच वी आर गोइंग टू स्कैन द वैल्यू. नाउ whatever is entered from the keyboard will be stored in the variable num. Let us say this is the variable num. मान लेते हैं कि यूजर ने वैल्यू 15 एंटर की है, तो दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस लोकेशन. बट हाउ? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्पेशल ऑपरेटर दैट इज नोन एज एम्परसेंड? तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे ही हम वेरिएबल बनाते हैं, इट इज वेरी मच सिमिलर और एनालॉजिकल टू द अलोकेशन ऑफ अ बर्थ इन अ ट्रेन. तो जब भी वेरिएबल बनता है, ये बिल्कुल उसी समान है जैसे कि ट्रेन में बर्थ का रिजर्वेशन होता है. मान लेते हैं ये मेमोरी है, तो इस मेमोरी में जहां कहीं लगातार 2 बाइट्स फ्री होंगी, वहां पर एक मेमोरी का रिजर्वेशन हो जाएगा नम नाम से. और हमें ये प्रियोर बेसिस पे पता नहीं होगा कि ये वेरिएबल मेमोरी में कहां बना हुआ है ना. हम चाहते हैं कि यूजर एक कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करे और वो इस वेरिएबल नम में आके स्टोर हो जाए. पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं इस वेरिएबल की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानता. सो first of all, I must know the address location or the memory location of this variable name, and that task
is actually achieved by the operator ampersand. This operator ampersand actually provides the address location of this variable num, and hence the value which is entered from the keyboard will be stored in this memory location num, as this will provide the address of that variable num. Now take the example of multiple variables. Let us say, for example, I have two variables, let's say a comma b. Now what should be the syntax for scanning? So we must have to write scanf. Then as we are scanning two integer values, 2%d will be required. One space may be placed over here, then comma, then ampersand a comma ampersand of b. This is how we can scan the multiple or more than one variables. Now if we are having different type of variables, we can scan all the variables simultaneously. For example, if we are having two variables a and b of the type integer, we are having two variables of the type char, we are having two variables of the type, let's say, float, f comma g, and I want to scan the values for these variables in a particular sequence. Let us say, for example, I want to scan the value for the variable. I should write the sequence over here. Let's say I want to scan the value for g at the first place. I want the second value to be stored in the variable b. I want the third value to be stored in the variable f. I want the fourth value to be stored in the variable a. I want the fifth value to be stored in the variable c, and I want the sixth value to be stored in the variable, let's say, d. Then what should be the syntax? So here आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जिस सीक्वेंस में आप वेरिएबल के लिए वैल्यू चाहते हैं, उसी सीक्वेंस में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने होंगे, और साथ में कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखने होंगे. हर वेरिएबल के साथ आपको एम्परसेंड लगाना होगा. लेट अस स्टार्ट. First, I should write scanf, then bracket and then double quotes. पहली वैल्यू मैं g के लिए स्कैन करना चाहता हूं. g फ्लोट टाइप का है, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? %f. दूसरी वैल्यू मैं b वेरिएबल के लिए स्कैन करना चाहता हूं. b इंटीजर टाइप का है, इसलिए उसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d. थर्ड वैल्यू f के लिए चाहता हूं. f इज ऑफ द टाइप फ्लोट, अगेन द फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी यूज्ड %f. फोर्थ वैल्यू a के लिए चाहता हूं. a इंटीजर टाइप का, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d. c और d दोनों ही कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल है, इसीलिए उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, %c और %c मुझे यूज करने होंगे. इसके बाद अब मुझे उन सारे वेरिएबल्स के नाम लिखने होंगे जिस सीक्वेंस में मैं इनको स्कैन करना चाहता हूं. तो पहली जो सीक्वेंस हमने लिखी थी, फर्स्ट वैल्यू मैं चाह रहा था कि वैल्यू वेरिएबल g में है. सेकेंड वैल्यू हम चाह रहे थे कि वेरिएबल b में आए, इसलिए एम्परसेंड ऑफ b. थर्ड वैल्यू में चाह रहा था कि वो वेरिएबल f में आए, इसलिए एम्परसेंड f. फोर्थ वैल्यू हम लोग चाह रहे थे कि वो वेरिएबल a में आए, इसलिए एम्परसेंड a. द करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d. फिफ्थ वैल्यू में चाह रहा था कि वेरिएबल d में आए, तो एम्परसेंड ऑफ d. और सिक्स वैल्यू में चाहता वेरिएबल c में आ जाए, तो आपको करस्पॉन्डिंग वेरिएबल एम्परसेंड के साथ लिखना होगा. इस तरीके से आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं. So whenever we want to scan more than values for more than one variable, then corresponding format specifier must be specified with the corresponding variables, that to be comma separated list of variables with ampersand. So इस तरीके से आप बहुत सारे वैल्यूज को, अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्कैन कर सकते हैं. Now we will move toward the output. Now for output, the formatted output function printf is used as mentioned over here. So let us take the syntax of that. So output. आउटपुट के लिए हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन की बात करें तो we'll use printf function. So the syntax of printf function can be viewed in following different categories. First is to display any message.
on user screen. What will be the syntax? The syntax will be, first of all, we must have to write printf, and in double quotes just specify or write the message which we want to display. The corresponding output will be message. So whatever is written in the printf function in double quotes will be displayed as it is on the user screen. This is how the printf function is used to display the message. Now हर बार हमें कोई मैसेज डिस्प्ले करना हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए प्रिंटफ फंक्शन का जो दूसरा वेरिएशन है वो यूज होता है वेरिएबल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए. फॉर एग्जांपल, और इस सिंटेक्स की जरूरत कैसे पड़ी? मान लेते हैं मेरे पास एक वेरिएबल नम है और मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल नम की वैल्यू यूजर स्क्रीन पर प्रिंट की जाए, तो दिस सिंटेक्स कैन नॉट बी यूज. लाइकवाइज यदि मैं ऐसा लिखता हूं कि printf और यहां मैंने 50 मुझे प्रिंट कराना है, एंड इफ आई राइट द नेम ऑफ वेरिएबल नम, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी नम इटसेल्फ. इट विल नेवर डिस्प्ले 50. इसीलिए ये सिंटेक्स यूज नहीं किया सकता वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए. सेकेंड वेरिएशन आई कैन राइट लेट्स से printf और डबल कोट्स में मैंने 50 यदि मैंने लिख दिया तो आउटपुट में हमेशा आपको क्या दिखेगा? 50. नो मैटर कि यहां पर नम वेरिएबल की वैल्यू 50 है, 100 है, और भी क्या कोई वैल्यू हो सकती है. तो इन दोनों ही तरीकों से हमने देखा कि पहला सिंटेक्स वेरिएबल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता. उस केस में तो हमें यहां पर दूसरा सिंटेक्स या दूसरा फॉर्म यूज करना पड़ेगा printf फंक्शन का. तो printf फंक्शन का दूसरा फॉर्म है टू डिस्प्ले value of variable. Then in that case what will be the syntax? So we must have to write printf function, printf, then again format specifier. Again the format specifier will dependent upon the type of variable whose value we want to display. This will be the syntax to display the content of this var name. What is var name? Var name is the name of variable whose values is to be displayed. What is format specifier? Again, the format specifier is dependent upon the type of variable whose value we want to display. So now, let us take an example. Let's say we are having a variable, let's say int sum, and this variable contains, after summation, let's say this variable contains 50, and I want to display the content of this variable sum. What should be the syntax to display the sum? The syntax should be, first of all, I must have to write printf. Then now, as the name of variable is sum whose values is to be displayed, and as it is of the type integer, the format specifier will be %d. कोई और वैल्यू मुझे डिस्प्ले नहीं करना है तो डबल कोट्स क्लोज करना होगा, फिर उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है. लाइकवाइज कुछ इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना होगा. अब जब ये स्टेटमेंट लिखा है, एग्जीक्यूशन के समय वट एवर इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम एट दैट मोमेंट विल बी सब्सटीट्यूटेड इन द डबल कोट्स इन दिस फॉर्मेट, दैट इज द नंबर फॉर्मेट. तो सम की वैल्यू इस समय 50 है, सब्सटीट्यूशन करते हैं तो सब्सटीट्यूशन के बाद डबल कोट्स में यहां पर इंटीजर फॉर्मेट में या नंबर फॉर्मेट में सम के वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा और स्टेटमेंट ये बनेगा जो कि आउटपुट में आपको क्या प्रिंट करके देगा? 50. मान लेते हैं थोड़ी देर बाद इस वेरिएबल सम के कंटेंट्स 60 हो जाते हैं. उस समय जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सम की वैल्यू 60 यहां पर %d के फॉर्मेट में, इंटीजर नंबर के फॉर्मेट में सब्सटीट्यूट होगी और आउटपुट क्या दिखेगा आपको? 60. लाइकवाइज, सो दिस इज द सिंटैक्स व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वेरिएबल. पर यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है. वो क्या? मान लेते हैं यूजर स्क्रीन पर ये 60 नजर आ रहा है, तो जो यूजर है वो इस 60 को क्या गेस करेगा? वेदर इट इज द सम ऑफ टू नंबर्स, वेदर इट इज द एज ऑफ एनी पर्सन, whether it is the marks of any subject, whether it is the percentage of the student. So इस तरीके से यदि मैं सिर्फ वेरिएबल के कंटेंट डिस्प्ले करता हूं तो भी आपको मैसेज क्लियर
नहीं होगा। यहां पर मैसेज यदि मुझे यूजर फ्रेंडली आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो मुझे मैसेज कुछ इस तरीके से देना चाहिए था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर का समेशन है तो आई शुड डिस्प्ले द रिजल्ट एज सम इज इक्वल टू 60 इंस्टेड ऑफ जस्ट 60 इट शुड बी सम इज इक्वल टू 60 टू मेक दिस आउटपुट यूजर फ्रेंडली। सो यदि आपको आउटपुट को यूजर फ्रेंडली बनाना है तो मुझे फर्स्ट सिंटेक्स और सेकंड सिंटेक्स को मिक्स करना होगा, मर्ज करना होगा। तो इस तरीके से प्रिंटफ का तीसरा वर्जन अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसका की उपयोग यूजर फ्रेंडली रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जा सकता है। अभी जैसे हमने एग्जांपल दिखा, मान लेते मैं चाहता हूं कि आउटपुट में कुछ ऐसा दिखे, सम इज इक्वल टू 60, देन आइडेंटिफाई the contents of the variable to be displayed। तो this is the content of variable। यहां पर second syntax यूज होगा। now sum is equal to is a simple message, इसको डिस्प्ले करने के लिए फर्स्ट सिंटेक्स यूज होगा। उस तरीके से यदि मैं इसे लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, सम इज इक्वल टू के लिए प्रिंटफ का फर्स्ट वर्जन मैं यूज करूंगा। तो स्टार्ट राइटिंग प्रिंटफ, प्रिंटफ लिखते ही डबल कोट्स में आपको पहले सिंटेक्स के हिसाब से मैसेज लिखना है। व्हाट इज मैसेज, that is sum is equal to is the message। now here the value of a variable is to be displayed, so second syntax will be used। जहां पर भी आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है वहां पर आपको उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि वेरिएबल सम इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने %d यूज किया। नाउ नथिंग टू डिस्प्ले मोर और फर्दर, तो यहां पर डबल कोट्स से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। देन स्पेसिफाई द कॉमा फॉर द सेकंड सिंटेक्स बिकॉज वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी डिस्प्लेड। और इस तरीके से मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जिसकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट होनी है। नाउ जब भी यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उस समय जो भी सम के कंटेंट्स होंगे वो यहां पर %d फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे। और ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, डबल कोट्स क्लोज। और इस तरीके से आउटपुट में भी आपको क्या दिखेगा, सम इज इक्वल टू 60 लाइकवाइज। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है num1 या n1 शॉर्ट में लिखें तो, दूसरा वेरिएबल है n2 और तीसरा वेरिएबल है sum। Let's say this contains 10, this contains 20, so obviously sum will be 30, and now I want to display sum of 10 and 20 is 30. Now again, what should be the written? Identify the variables. So this is variable, this is variable, this is variable. Identify the message, message, message and message. Now merge these two syntax 1 and 2 and start writing. यहां से मैं शुरू करता हूं। Let's say printf sum of is a message, write as it is। Now 10 will be substituted from the variable n1. n1 is of the type integer, assuming that is the integer variable. The corresponding format specifier will be %d and a simple message, just write as it is। 20 किसी वेरिएबल से आने वाला है, वेरिएबल इंटीजर टाइप का, इसलिए यहां पर इसकी जगह पर %d, दैट इज द फॉर्मेट, इंटीजर फॉर्मेट। इज मैसेज है, आप भी लिख दीजिए एज इट इज। फिर उसके बाद 30 किसी वेरिएबल से आने वाला है, वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना होगा, %d। इसके आगे कोई और मैसेज डिस्प्ले नहीं करना है, जस्ट क्लोज द डबल कोट्स एंड पुट अ कॉमा। नाउ यहां पर 3% लिखे हुए, जहां पर 3 अलग अलग वेरिएबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने वाली है। Write the names of variable in the same sequence, let's say n1, n2 and sum। That's it। होगा क्या, जब कभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा n1 की वैल्यूज पहले %d पर इंटीजर फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट होगी, n2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट होगी और सम की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट होगी। और इस तरीके से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, सम ऑफ 10 and 20 is 30। So this is the printf function। Now as we have discussed, there are 2 types of functions, that is console input output functions, formatted and unformatted. In formatted, for input scanf function is used, and unformatted category function get ch, get che, get char and get s,
That getters is used for scanning the strings. And all these functions are for character input. For output, formatted category में हम लोग printf function use करते हैं और unformatted category में put ch, put char and put s. That put s function is basically used for displaying the strings on the user screen. Now we should see something about the formatting. कि ये formatting होती क्या है? Just to get an idea about the formatting, हम लोग एक example लेते हैं और उसमें फिर उसकी मदद से हम लोग उसको समझेंगे. मान लेते हैं मेरे पास एक वेरिएबल है weight. Let us take an example. And the content of this variable weight is 69. And I try to print this in different formats. जैसे कि for example मैं लिखता हूं weight is equal to %d and then name of variable. In that case, what will be the output? In that case, the output will be, that is, weight is equal to, and then value 69 will be substituted over here. Now if I change the formatting, how the formatting is written, I am using integer formatting. Let's say if I write weight is equal to %2d, then double quotes close, and then the name of variable. Now what should be the output? Now what does it mean? यहाँ पर 2d का मतलब है the system will allocate 2 decimal places or 2 digit places for the output. So यहाँ पर weight is equal to, and it will allocate 2 digits. These are 2 digits. और यहाँ पर 9 and 6. So that will be the output. 69 will be displayed. Now if I write printf weight is equal to %6d and then the name of variable, then what will be the output? 6d का मतलब होगा 6 digits. So the output will be weight is equal to, and now 6 digits will be allocated, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and here 9 and 6. This will be the output. This place will remain empty. Final output कुछ ऐसा होगा. Okay. If I write printf weight is equal to %-60 comma weight, then the alignment will be from left side. The output will be this will be the 69, and to put a difference between, if I write kg, then output will be, after that the kg will be displayed. If I change in the same manner, what will be the output over here? If I write kg, so here this kg will be displayed like that. That is the formatting. Now in the similar fashion, we should write, or we should see the float formatting. What is float formatting? Let's say I print some outputs with the float formatting. If I write printf /n, the /n is for new line, %f
%f, comma, let's say 3.5, comma, 16.9, comma, 1 to 3.5. What will be the output? The output will be 3.5. This is 6-digit precision. Then space 16.9, and then 123.5. After one space 123.5. This will be the output. If I write the same statement again, that is printf /n, then %f, and let's say write 5.7, comma, 162.9, comma, 1249.5. Then what will be the output? Again, this is, let's say 5.7, like that. Then after one space 162.9, then 49.500. So this will be the output. इस आउटपुट को प्रॉपर फॉर्मेटिंग देने के लिए मैं यहां पर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकता हूं. लेट्स से printf /n, then I specify 10.1f, %10.1f, then %10.1f, then %10.1f, comma, 3.5, 16.9, comma, 1 to 3.5. Again the same statement, I'll write printf /n, %10.1f, 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 and the same data, that is 5.7, 162.9, 1249.5. Now what does it mean? कि 10.1 means क्या? Total 10 allocations will be there, and in that point after point 1 digit place will be reserved. देखते हैं कैसे. मैं यहां पर इसको ड्रॉ करता हूं. Let's say 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 10 places. Again 10 places. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again 10 places. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Now start writing printing. 10.1f and 3.5. This 5 will be displayed over here, then point, and then 3.5. That is 3.5. All these locations will be empty. Second data is 16.9. 16.9 means 0.9 will start from here. This is point, then this is 6, and this is 1. This will be 16.9. This space will be empty. And then 1, 2, 3.5. Again 10 places. These are the 10 places. This is 5, then point, then 3, 2, 1. And this place will remain empty. In the second line, what will be the output again? 10 places, then 5.7. So here 7 point, and here will be 5. Then 162.9 means this is 9 point, then 2, 6, 1. This is how the formatting is done. And then the last one is, here it is again 0.5, then 9, 4, 2, and 1. So यहाँ पर यदि हम लोग दोनों आउटपुट्स को कंपेयर करेंगे तो इस आउटपुट के बजाय ये आउटपुट ज्यादा बेहतर दिखाई देगा और ज्यादा अच्छा दिखेगा. So this is all about the formatting, and this is all about the input-output instructions. Please do like, share, and comment, and subscribe my video channel
Don't forget to press the bell icon. Thank you.